trend is very, very important. Okay, now just see, whenever we talk about education, rationality and critical thinking, so thinking is like a game. It does not begin unless there is an opposite team. So can you write an essay on this? So naturally, अगर आपको इसके बारे में लिखना है, you should be completely aware what is the meaning of thinking, and it cannot be thinking is the process. कौन सा process है पता नहीं. Thinking is like a game, so a comparison has been made. It does not begin unless there is an opposite team. It means, if we go by the theme of this essay, it somehow tries to say thinking becomes relevant when there is some issue. Unless there is some issue, thinking is not of any use. Now, this is a topic which is in front of us. How to do brainstorming on this? How to ensure the parameters which has been put forward in front of us by UPSC to be followed when going for brainstorming of such a topic. That's why we should have complete understanding of this theme. What is critical, what is thinking, what is critical thinking, what is rationality, and what is the role of education in inculcating all these things. To what extent India's education process is more or less like this. हमेशा बोलते हैं ना, we are rote learning, we are going for rote learning. Even in UPSC, majority of the times क्या होता है, rote learning ही होता है. 60-70% तो आपने रट्टा मारा है. Even यहाँ भी लिख रहे हैं exact impression. If exact impression required, again we go towards rote learning. There is no other way. You have to do it. This is the topic. See, inspiration for creativity springs from the effort to look for the magical in the mundane. So, when I say that this theme is important, yes, this theme is very, very important. That's why we have to develop our thought process. We are going to have certain classes specifically on them. आपको ये चीज समझ में आ रही है? That whatever we are discussing, UPSC उसी के आसपास ही पूछेगा. Education is what remains after one has forgotten what has learned in the school. तो कुछ भी नहीं बचा हम लोगों के पास तो कि what was left. Right, so education, inspiration, creativity, thinking. Can you see these are some basic things? Today, whenever we talk to someone, हम से यार सोच लेता है एक बार, think. But अगर हमसे कोई पूछ ले thinking as a game, thinking as a process, then we'll falter. 100% will falter. We'll not be able to generate dimensions on thinking. And this is the challenge that we have in the essay paper these days. At these areas that we have, how to get good insight into this, because ये GS का part है नहीं. GS में आपको कोई बैठा के rationality के ऊपर एक lecture नहीं लेने वाला. It's impossible. ना critical thinking पे होने वाला है. And those toppers who are getting good marks, somehow they read books. Because if somebody has a habit of reading books, ये सब चीजें books में बहुत होती हैं. ऐसा नहीं कि इनके बारे में किसी ने लिखा नहीं आज तक. There are thousands of books which are written by different people. Like एक बहुत famous book है Sapiens. Sapiens talks about thinking. The whole process of thinking, if we see why we as a human being are at the top of the ecological pyramid today. क्यों है? Because of our thinking process. We were able to defeat everyone. We are able to create civilization because of thinking. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, हाँ एक पर्सपेक्टिव खुल गया आपके लिए कि हाँ ओके, एक तरीके से देख सकते हैं कि हाँ thinking has been very, very relevant. And if we see from the perspective of human progress, yes, human progress became a game for us. We want to have certain things, and that's why we had to think in a certain manner. So whenever we read these topics, we should get into the intricacies of these topics. What is education? What is thinking? What is creativity? What is this? What is that? Because if that is not clear to all of us, अच्छा ऐसे नहीं बना पाएंगे. Because brainstorming करना relatively easy होता है अगर आपको topic समझ में आता है. If I give you G20, majority of you will be able to do brainstorming. You will not face much issues. You'll know कि हाँ okay, what is G20 all about? You'll know about that. What are India's interests? That becomes one more dimension. What are the steps taken by India recently? Okay, G7 comparison with G20, etc. So their brainstorming is relatively on the easier side.
but here brainstorming becomes very difficult. And that's why what happens when we do not have the exact understanding of the keywords, we just go towards examples. Example लिखना चालू किया और बस उसी को लिखते चले गए, पूरा पेपर भर दिया. This is not how you will get very good marks in essay. Essay paper has become very difficult because of this. Second, see, purpose of life. Not all who wander are lost. ये सब वो statements है ना जो YouTube पे thumbnails पे लिखी होती हैं. मुझे लगता है कि यूपीएससी का पेपर भी वहीं से बन रहा है. Not all who wander are lost. So अब ये टॉपिक आपके सामने है, that at least you should know the meaning of wander. Lost, what is the meaning of lost? Because if we are not going to understand these fundamental things, how can we write an essay on this? We should have some stories which can directly connect with this. Like for this topic, I'll give you an example later on. The example of Amazon. Amazon, all of you know about Jeff Bezos, the richest person that we have. So Jeff Bezos, he was a relatively successful person initially. It was not like that he was struggling in life. He was linked with mutual funds, etc., managing money of other people. Everything was going good in his life. But still, he tried to wander. He tried to develop the e-commerce sector. And this wandering of 10 years, 20 years had made Amazon one of the biggest company in the world. So these stories are very important when you're talking about purpose of life. Okay, हमें क्या होता है ना, हम चार ही एग्जाम्पल लेके बैठते हैं. ISRO has been in news, right? ISRO has been in news for multiple, you can say, experiments, ventures which are being done by ISRO in the last few years. Like Chandrayaan 2, when we talk about Chandrayaan 2, a picture of Modi ji with the ISRO chiefs came because Chandrayaan 2 did not work. So that becomes a issue कि भाई ठीक है, what is this example all about? That example becomes a kind of leadership that the PM, और अभी World Cup में देखो, what happened after the World Cup? सारे मैच जीतते जा रहे थे. The one that mattered, we lost that. And Modi ji, in the next day, is being seen with Rohit Sharma as well as Virat Kohli. That is what leadership is. अच्छा दिन होता तो हर कोई आया था फोटो खिंचवाने, बुरे दिन ही तो आना था. Same example can be seen in case of ISRO as well as the defeat of Team India. Not all who wander are lost. See, a ship in harbor is safe, but that is not what ship is for. It means that yes, there can be comfort. Okay, घर बना के अच्छे से अंदर रह सकते हो, but is it going to ensure your complete growth? No, it's not going to happen like that. Many people have had that kind of life where they could have just कि चलो ठीक है, क्या जरूरत है ये सब करने की. In general parlance, this is how we think. Like when we see the example of Gandhi ji was having lots of privileges, belonged to princely state, okay, learned in London. अब लंदन में सोचो, हम लोग आज तक नहीं गए, but Gandhi ji went 19th century. After that, for job, he was going to South Africa. After he was thrown from the train, he was having this kind of thing in his mind, the dilemma that the ship is safe in the harbor. He could have let it go because he was probably one of the most privileged person, but he still pursued. And next 30-35 years of his life, they were given just for the public service. So even if we write about any personality, those stories, those examples, they should be very well polished. If you're writing random stuff, तो यार देखो उससे कुछ नहीं होने वाला. Newspapers में से अच्छे anecdotes भी हम लोगों को निकालने पड़ेंगे under these things. The process of, यही बोल रहा था मैं आपको, self discovery has now been technologically outsourced. How? First, we should know what is the meaning of self discovery. Then we can connect it with the technology. Then we can say to what extent this has been done and this has not been done. Are there certain parameters which can never be technologically outsourced? This is how you are going to go for the brainstorming. When brainstorming is going to be completed, then only यार हम कुछ आगे बात कर पाएंगे.
That's why this essay paper previously nobody was doing very, I would say, बहुत अलग से इसकी प्रिपरेशन नहीं होती थी. Even the toppers of 2013, 14, 15, 16, what we used to do, we used to prepare 10 to 12 themes. Climate change कर लिया, women empowerment, etc, etc, and it used to work every year. Same कहानी हर बार लिख के आते थे essay में. Like if any topic came with respect to women, I had remembered one specific quote of Amartya Sen. Give them voice and choice, they will charter their own destiny and India will become a very powerful nation. And the voice and choice, these are the two fundamental words, right? अभी आज की डेट में ना वॉइस मिल रही है ना चॉइस. चॉइस का तो बहुत ज़्यादा इशू है. वॉइस अगर थोड़ी बहुत मिल दे भी दी है सोशल मीडिया ने, लेकिन चॉइस तो आज भी नहीं मिल रही है. अब चॉइस इज़ अ वेरी बिग वर्ड. हम वैसे चॉइस बहुत यूज करते हैं, बट चॉइस सोचो स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ, with respect to what they eat, what they study, whom they marry, what kind of job they wish to do, etc. So that choice is a very very big and powerful word. But आजकल यूपीएससी ने उतना आसान काम छोड़ा नहीं है. तो वॉइस एंड चॉइस लिख के नहीं बच पाओगे कि what Amartya Sen has discussed in development as freedom. It's not that easy now. So somehow we have to put a lot of effort on this. That's why इस बार जब मेंस चल रहा था तो वी फोकस्ड फॉर फ्यू स्टूडेंट्स, भाई आप स्टार्ट करो ये प्रोसेस, विल फोकस ओनली ऑन द फिलोसॉफिकल एसेस, बिकॉज नेचुरली बाकी थीम फिर भी आसान है, दे आर डूएबल, यू हैव द एग्जांपल्स, बट फॉर दीज काइंड्स ऑफ टॉपिक्स ऑल ऑफ अस आर सफरिंग इन द सेम मेजर. एक जैसा ही हमारा हाल है सबका. वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल्स आर वेड डाउन बाय रिस्ट्रिक्शन, बॉय विद डिमांड्स टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन्स. दिस इज कंप्लीटली द आउटकम ऑफ पैट्रियार्की. पैट्रियार्की में हम सिर्फ ये सोचते हैं ना कि भाई पैट्रियार्की इज समथिंग व्हिच इज ओनली अफेक्टिंग द गर्ल्स. नो, इट इज आल्सो अफेक्टिंग द बॉयज. सो दैट इज द पर्सपेक्टिव व्हिच इज बीइंग आस्क्ड हियर, एंड हियर वी शुड हैव सर्टेन गुड एग्जांपल्स. कोई एग्जांपल देके बताओ मुझे इसका, कोई एग्जांपल पता है? If somebody says girls are weighed down by restriction, boys with demand to equally harmful discipline, so do we have some examples to satisfy this statement? कोई बड़ा एग्जाम्पल हो? यही थिंकिंग प्रोसेस है जो एसए में काम आता है. एसए इज प्योरली अबाउट थिंकिंग. आप सोचते हैं ना एसए का पेपर रखा क्यों है? सिर्फ एक ही रीजन के लिए, आपकी थिंकिंग चेक करने के लिए कि कितना जल्दी थिंक कर पाओगे, उसको पेपर पे कितना जल्दी लिख पाओगे, बिकॉज इट्स रेस अगेंस्ट टाइम. चलिए सोच लीजिए लास्ट तक, नन को भी काफ़ी बड़ी क्लास है. हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड. सम दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिस इज अ कंप्लीट रिपीट. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई हर बार यूपीएससी भी इनोवेशन करेगा. इट इज गोइंग टू डू इनोवेशन नेचुरली इन दीज थीम्स इटसेल्फ, but at the same time we have to prepare it in such a manner that we should have little bit of idea about the philosophy of these topics, number one. Second, we should have good examples, we should have good case studies, because if those things are going to be missing, essay में रस नहीं आएगा. Essay is purely a game about how to present your ideas, and when we present our ideas in a very good fashion, naturally देखो I have seen some people getting 175 marks. अगर मैंने 152 अचीव किया, कुछ लोगों ने 175 अचीव किया ऐसे में. 175 आप सोच सकते हो सिंगल हैंडेडली आपको आईएएस बना देगा, because 175 is something which is completely top of the world. See, human values, the time to repair the roof is when the sun is shining. You cannot step twice in the same river. A smile is the chosen vehicle for ऑल एम्बिग्विटीज. अभी हमें लगता है हाँ बात तो सही है, जब कुछ नहीं समझ में आता हम बस एक स्माइल्स पास करते हैं, दैट्स हाउ इट इज. बट कैन यू राइट एन एसे ऑन दिस? या उस टाइम मोनालिसा याद आएगी, बिकॉज दैट इज द पेंटिंग विच इज द मोस्ट फेमस. अगर हमें इंट्रोड्यूस करना है तो कुछ तो पता होना चाहिए ना कि यू सी फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्माइल यू गोइंग टू सी. And that became one of the most famous painting in the world, probably सबसे valued painting in the world है. वो एग्जाम्पल उस टाइम पे आपको स्टक करना चाहिए. So UPSC is working on these small things. What is thinking? What is creativity? What is smile? What is self discovery? What is this? What is that?
So it means a systematic preparation can be done, but what you need to do, you need to focus on these small things. अगर हम इनको ऐसे ही छोड़ दें कि ये तो हर बार का नया है, हर बार नया नहीं है, आसपास में ही है इनके आंसर्स. अगर हम साइंस एंड टेक में देखें, मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन. अच्छा लग रहा है कोट, बट इफ वी स्टार्ट राइटिंग ऑन दिस, व्हाट इज मैथमेटिक्स, what is reason and what is music? These are the three things that we have. What is research but a blind date with knowledge? है ना कि when we see these essay ना पेपर में ऐसा लगता है कि किसी का दिल टूटा है. They are giving these essay topics, but research, knowledge, these are the things which you have to understand. When somebody says research, when somebody says mathematics, उसका meaning क्या है? All of us we know how to relate topics, but if fundamentally हम किसी भी topic पे बहुत अच्छे हैं नहीं, and that is the gap which is being exploited by UPSC, and that's how they are going to affect your marks. ऐसे में देखो 250 नंबर है, 250 में से अच्छे से हम पढ़ाई करें तरीके से तो 140 मार्क्स तक तो आराम से लेके आ सकते हैं. Lots of students are getting it, but तरीके से कि अगर अपने को पता है कि एजुकेशन से क्वेश्चन आता है, रैशनैलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, पर्पस ऑफ लाइफ, वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर जस्टिस, एटीट्यूड एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, लाइक विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक. नाउ you should have some good examples to support it. You should know what is the meaning of intuition. ये नहीं कि उस टाइम पे सिर्फ एक वर्ड लिख के बच जाओ, गट फीलिंग, नहीं बच पाएंगे सीरियसली, बिकॉज आपको ऐसे लिखना है, एंड दैट टू इन 1000 वर्ड्स. इट्स नॉट लाइक कि एक पैराग्राफ लिख के बच जाएंगे या 10 मार्कर क्वेश्चन है. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. तो इन सब के हमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे. इन चीज़ों को कब यूज करना है, जैसे ऑल ऑफ अस नो अबाउट द प्रीवियस वर्ल्ड कप इन विच इंडिया वॉन 2011, है ना. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम धोनी केम बिफोर अदर बैट्समैन, है ना. युवराज सिंह से पहले आ गए थे. क्यों आए थे? देयर वाज अ गट फीलिंग व्हिच वाज गोइंग विद इन हिम दैट इफ आई गो राइट नाउ, ठीक है, बाद में ज़्यादा रन भी चाहिए तो युवराज बाद में देख लेगा, बट इट वाज प्योरली अबाउट हिज इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक. इंडिया में हर कोई क्रिकेट देखता है, तो रिलेटेबल एग्जांपल आपको क्रिकेट में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, एंड दे कैन इजीली सिंप्लीफाई दीज फिलोसॉफिकल डायमेंशंस. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक, तो ऐसा नहीं कि एक ही फील्ड से एग्जांपल आएंगे, साइंस फील्ड से भी आ जाएंगे. लाइक इफ वी सी दिस टाइम अराउंड चंद्रयान 2 फेल्ड, ओके. इन चंद्रयान 3 दे केम अप विद वन टेक्नोलॉजी नोन एज फेल सेफ टेक्नोलॉजी. फेल सेफ टेक्नोलॉजी इट मीन्स कि अगर एक पार्ट खराब होता है उससे दूसरे पे इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, एंड दैट इज अगेन इंट्यूशन एंड लॉजिक. कि अगर गलती हो भी गई फिर भी हम किसी तरीके से लॉजिक से उसको बचा लेंगे. सो सेम इवेंट्स आर देयर, you should understand how to utilize them while writing the essay. Just because you have a choice, it does not mean that any of them has to be right. बहुत बढ़िया. ये तो लड़ाई करते हो वैसे भी लास्ट में आता है, just because you have a choice, that doesn't mean you have to exercise it. And we should always try to understand these statements because they are now going to become part of this exam every year. ये नहीं बचने वाले हम इन सबसे. और यूपीएससी ऐसा कर रहा है कि हर साल ना आसपास में ही देता है कि तुम इतना भी लिख के दिखा दो, बहुत है तुम लोगों के लिए, बिकॉज तुम लोगों के ऐसे उन्होंने पढ़ चुके हैं. कैसा आप लोग लिख के आ रहे हो. योर परसेप्शन ऑफ मी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ यू, योर रिएक्शन टू यू इज अवेयरनेस ऑफ मी. So very basic fundamental things they are being asked here: perception, reflection, reaction, awareness. The essay is not difficult, but the only thing is we do not know what is the meaning of awareness. We do not know what is perception, because somehow these kinds of things we never learned in our education. कभी पढ़ा हमने ये सब चीज़ बैठ के? पढ़ा ही नहीं हमने. जिस एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ ये बोला होगा कि साइंस एंड टेक ले लो, कुछ बड़ा करोगे लाइफ में. डू यू थिंक सोशल स्टडीज आर गोइंग टू गिवन दैट मच ऑफ प्रेफरेंस? नो, इट इज नॉट गिवन. मैनी ऑफ अस वी डू नॉट हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स. फॉरगेट अबाउट वो बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, अपनी स्टैंडर्ड बुक्स भी नहीं पढ़ पाते हम.
Newspapers, when we read newspaper, we don't read it for the benefit of it, of this kind of learning these things. We study only from the perspective of कि एग्जाम में क्या आने वाला है डायरेक्ट. That's why somehow our minds are not very well developed on these new paradigms which are being tested by UPSC. और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं. I've seen many toppers getting 100 marks, 110, 115. रैंक आ रहा है लेकिन अच्छा रैंक नहीं आ पा रहा है उसकी वजह से. एंड फॉरगेट अबाउट द न्यू पीपल, बिकॉज ये सारी थीम्स जो हैं अगर हम इनको अच्छे से नहीं करेंगे कवर तो कहीं ना कहीं हम अच्छे मार्क्स नहीं लेके आएंगे. दैट इज़ द रियलिटी.